हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मामुनी कोडिंग टेक्नोलॉजी। तो आज हम ए वीडियो रे जानिबा वेबसाइट रे केमथि लॉगिन पेज तैयारी करा जाय। तो चलंतु आज हम ए वीडियो को स्टार्ट करिबा। प्रथमे हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन करिबा और index.html रे हमें html स्ट्रक्चर लिखिबा और टाइटल भीतर लिखिबा हमें कलरफुल लॉगिन पेज। कलरफुल लॉगिन पेज और बॉडी भीतर मु गोटे div टैग को ओपन कर दउछि और div को मु क्लास दे दउछि। लिखि दउछि क्लास इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा बॉक्स। यहाँ पर मु गोटे स्ट्रॉन्ग टैग को व्यवहार करूछि और स्ट्रॉन्ग को भी मु क्लास दे दउछि। क्लास इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा वेलकम। एठारे पे मु लिखि दउछि वेलकम। और एठारे मु पुनी स्ट्रॉन्ग टैग को व्यवहार करूछि और याको समथिंग मु क्लास दे दउछि। क्लास इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा यूजर नेम। यूजर नेम और हम गोटे इनपुट टैग को ओपन करछे और टाइप भीतर हम लिखि दउछि टेक्स्ट और नेम भीतर हम लिखि दउछि ईमेल। और थोड़े क्लास देख करी दउछे थोड़े ईमेल और प्लेस होल्डर करी दउछी यूजर नेम। और मोर फाइल की जाइके को सेव करूछी और एठारे रिफ्रेश करूछी। देखन तो एठारे हमर वेलकम यूजर नेम मैसेज अछि। तो एठारे हमको लागी के अछि तो हमें याको लाइन ब्रेक कर दबा। तो थोड़ा हम बीआर टैग लगाई दबा। सब लाइन में बीआर टैग लगाई दबा। एठारे हम डबल बीआर टैग लगाउछि। तब हम फाइल के जाके सेव करूछि और एठारे रिफ्रेश करते देखन तो हमारा लाइन ब्रेक होके तळको आसी जाई छै। तो हम style.css को जाउछि और एठारे हम लिखि दउछि मार्जिन 0 पैडिंग 0 बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तब हम index.html को देखी ए बॉक्स को एठार कॉपी करी नउछि कारण हम एठारे आपको स्टाइल देबी। तो एठारे हम लिखि दउछि डॉट बॉक्स ब्रैकेट बैकग्राउंड कलर first 46 F4 35 semicolon height एठारे मु दे दउछि 310 पिक्सल। वाइड्थ एठारे मु दे दउछि 250 पिक्सल और मार्जिन लेफ्ट एठारे मु दे दउछि 511 पिक्सल। मार्जिन टॉप एठारे मु दे दउछि 130 पिक्सल
border radius एठारे मते जाउछि 19 पिक्सेल अब हम फाइल के जाके आको सेव करूछि एठारे रिफ्रेश करूछि एठारे हमरा आसने कारण हम एहाको लिंक करिने हमने एठारे लिंक दे दबा लिंक href रे मु लिखि दउछि style.css अब हम फाइल के जाके आको सेव करूछि एठारे रिफ्रेश करछि देखंतु हमर बैकग्राउंड ग्रीन कलर आसी जाइछि तबे हमें वेलकम को बोल्ड करके हमें आपको कलर करबा हम अबे index.html वेलकम को कॉपी करना होछि और एठारे हम पेस्ट कर दउछि तथा हम फॉन्ट साइज दे दउछि 40 पिक्सेल एठारे हम दे दउछि फॉन्ट वेट एठारे हम दे दउछि बोल्ड मार्जिन लेफ्ट एठारे हम कर दउछि 27 पिक्सेल और कलर दे दउछि एठारे हम आपन चॉइस एठा आपन कोनोसी भी कलर दे परिबे एठा हम डीप पिंक दे दउछि और फाइल के देके हम को सेव करूछि और एठारे रिफ्रेश करछि देखंतु हमरा बोल्ड है कि कलर चेंज हो जाय छी तबे हम index.html रो और एठार मु यूजर नेम को कॉपी करे नउछि एठार मु आपको पेस्ट कर दउछि ब्रैकेट एठार मु फॉन्ट वेट दे कर दउछि बोल्ड font size एठारे मुझे दउछि 20 पिक्सेल मार्जिन लेफ्ट एठारे मु कर दउछि 20 पिक्सेल कलर दे दउछि मैं एठारे सेम डीप कलर एठारे हम दे दउछि डीप पिंक तब हम फाइल के लिए क्या को सेव करूछि एठारे रिफ्रेश करूछि तब हम index.html को जाउछि और एठारे हम पुनी गोटे स्ट्रॉन्ग टैग को अप्लाई करूछि और ए स्ट्रॉन्ग को क्लास दे दउछि class is equal to inverted comma password और एठारे हम लिखि दउछि पासवर्ड एठारे हम बे इनपुट टैग को ओपन कर नउछि और टाइप रे हम लिखि दउछि एठारे पासवर्ड और नेम रे एठारे हम लिखि दउछि पासवर्ड 2 क्लास
एठारे मु दे दोछि क्लास एठारे मु दे दोछि पासवर्ड 2 और पुणी मेथड दे दोछि क्लास इज इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा पासवर्ड 2 तो थर्मल प्लेस होल्डर दे दोछि प्लेस होल्डर प्लेस होल्डर एठारे मु दे दोछि पासवर्ड एठारे मु पुणी इनपुट टैग को ओपन करूछि और टाइप पर लिखि दोछि एठारे मु बटन और नेम रे एठारे मु लिखि दोछि पासवर्ड 2 एठा नेम रे एठारे मु लिखि दोछि लॉगिन एठारे वैल्यू दे दोछि वैल्यू एठारे मु दे दोछि लॉगिन क्लास दे दोछि लॉगिन मु फाइल के लिए आपको सेव करछि एठारे रिफ्रेश करछि तबे मैं आप भी टैग लगा देबी आर चलो फाइल के जाके आपको सेव करूछि एठारे रिफ्रेश करूछि तबे मो style.css को जाउछि एठारे मु एबे ईमेल को कॉपी करि नउछि एठारे पेस्ट करि दउछि ब्रैकेट मार्जिन लेफ्ट एठारे मु करि दउछि 20 पिक्सेल हाइट करि दउछि आपको मु 30 पिक्सेल वाइड्थ करि दउछि एठारे मु 170 पिक्सेल बॉर्डर रेडियस दे दउछि एठारे मु 10 पिक्सेल फॉन्ट वेट एठारे मु दे दोछि बोल्ड एवं फाइल के जाके आपको सेव करूछि एठारे रिफ्रेश करूछि एवं index.html को जाके एठारे पासवर्ड को कॉपी करि नउछि ब्रैकेट फॉन्ट वेट एठारे मु दे दउछि बोल्ड फॉन्ट साइज एठारे मु दे दउछि 20 पिक्सेल मार्जिन लेफ्ट कर दउछि एठारे मु 20 पिक्सेल
कलर दे दो सेठारे मु डीप पिंक तबे फाइल के लेके मु सेव करूची अठारे रिफ्रेश करूची तबे हम index.html को लेके पासवर्ड 2 को कॉपी करि नउची अठारे को पेस्ट कर दउची ब्रैकेट मार्जिन लेफ्ट कर दउची अठारे मु 25 पिक्सल हाइट कर दउची अठारे मु 35 पिक्सल वाइड कर दउची अठारे मु 180 पिक्सल border radius क्षेत्र में 20 पिक्सल font weight एठारे मु कर दछि bold तबे मु फाइल के जाके को सेव करछि एठारे रिफ्रेश करछि तब हम index.html को लेके थारे लॉगिन को कॉपी कर नउछि तथरा हमें यहाँ पे स्टाइल दबा तथरा मैं यहाँ पे पेस्ट कर दउछि ब्रैकेट हाइट एथरा में दे दउछि 50 पिक्सल वाइड एथरा में दे दउछि 120 पिक्सल मार्जिन लेफ्ट कर दउछि एठारे मु मार्जिन लेफ्ट कर दउछि एठारे मु 60 पिक्सल बॉर्डर रेडियस दे दउछि एठारे मु 20 पिक्सल बैकग्राउंड कलर एठारे हम दे दउछि हार्ट्स 0000 डबल एफ ब्लू कलर होगा तबे मु फॉन्ट वेट दे दउछि एठारे बोल्ड फॉन्ट साइज एठारे हम दे दउछि 20 पिक्सल कलर्स दे दो एठारे मु डीप पिंक तबे फाइल के लेके मु सेव करूची एठारे रिफ्रेश करूची तो एठारे चाहिए तो अपन चले आप कलरफुल भी करि परिबे तथा अपन यूजर नेम पासवर्ड भी लिखि परिबे तो अपन मानन को यदि वीडियो भल लागि थाए तले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे थैंक्स फॉर वाचिंग।